Hello friends, our today's topic is a rotating magnetic field of induction motor and a working principle of induction motor. In last lecture we have gone through the basic construction of induction motor, and in this session we will see the how rotating magnetic field is generated and how rotor rotates. So rotating magnetic field. Now we know that whenever AC supply is given to the winding, some field is generated. Whenever AC supply is given to the winding, some field is generated in that winding, that we know. So that field is in the form of some alternating. So alternating supply is there and field is generated. But when three-phase supply is there, okay, and it's given to the three-phase winding. So in the induction motor, three-phase supply is given to the stator. Now stator contain the winding. So rotating magnetic field is generated. Okay, so how it's generated, that we will see. So some field is generated, that you know. Now in three-phase supply we know every phase having a phase shift of 120 degree, means phase 1 having a value that is Vm sin omega t, then phase 2 having a value that is Vm sin omega t minus 120, so that is a phase shift of 120 degree. Then phase 3 having a again 120 degree phase shift, so the value of phase 3, that is a Vm sin omega t minus 240. So that is a three-phase system and that we know. Okay, so accordingly that voltage, जो voltage हमें मिल रहा है, accordingly that flux is generated. So if we say in phase 1 or phase R, what flux is generated, that is given by phi m sin omega t, where phi m is a maximum value of flux. Okay, then in phase 2 means in Y phase क्या हो रहा है, phi m sin omega t minus 120, वो 120 डिग्री का फेज शिफ्ट है कंपेयर टू द फर्स्ट वन. ओके, एंड थर्ड इज phi m sin omega t minus 240, again 120 degree phase shift, so compared to the first one is a 240. So this is the behavior of flux in three phase system when it's given to the winding. Okay, so here you can see how three phase system is there. Okay, here that RYB that we know, red, yellow and blue. Okay, so accordingly three phase cycle is given here. Sorry. So here I have divided this cycles in 6 intervals. So here you can say it's a 0 point, then this is a 1 point, this is a 2 point, this is 3 point, this is 4 point, and one cycle contains 6 point because 360 degree. Okay, so one point is defined with a 60 degree. So here you can see three phase voltage waveform, and also we can say three phase flux waveform. So here at 0 point R phase start, and from 120 degree second phase start, and again from 120 degree third phase start. Okay, and if we define with a vector diagram, this is that. Okay, 120 degree phase 1, then 120 degree phase 2, 120 degree phase 2, and then we have 120 degree phase shift of phase 3. Okay, so now this three phase voltage waveform voltage is applied to the winding, and finally we can generate the flux that is in the form of three phase. Okay, so 120 degree phase shift is there. Okay,
phi m, that is the maximum flux. Okay, so now let's say here taking the point at 0, let's say at 0 point, here the value of phase 1 flux is 0 because voltage is 0 here. Okay, and at that time phase 2 and 3 having a some value. Now phase 3 having a positive value and phase 3 having some negative value, and that is nothing but a root 3 by 2 phi m. Positive root 3 by 2 phi m and negative root 3 by 2 phi m. That is the value of phase 2 and phase 3. Now at point 1, phase 3 is 0. So flux at point 1 of phase 3 is 0. यहाँ phase 3 की value 0 है, but phase 1 and phase 2 is there. Phase 1 having some positive value and phase 2 have some negative value. So phase 1 having a positive value, that value is nothing but a root 3 by 2 phi m, and phase 2 having a value that is minus root 3 by 2 phi m. Same thing at point 2, second phase is 0 and phase 1 and phase 3 having a some value. Okay, so at a different point we can say one phase having a 0 value. Okay. So if we see in detail, so here it showed that at 0 point, at 0 point phi m is 0, phi m is 0, phi 2 equal to minus root 3 by 2 phi m, and phi 3 is equal to root 3 by 2 phi m, that is a positive value. Now at point 1, means at 60 degree, the value of phi 3 is 0, phi 3 value is 0, phi 1 and phi 2 is there, means phi 1 having a positive value and phi 2 is having a negative value. Same thing at 120 degree or at point 2, phi 2 is equal to 0 and we have a phi 1 and phi 3 value, means phi 1 having a positive value and phi 3 equal having a negative value. So these are the flux at different point or different interval. So here I got 2 flux out of 3, मुझे 2 flux मिल रहे हैं, phi 2 and phi 3. So what is a resultant one? So resultant one is a vector difference of these two. तो resultant flux क्या generate होगा? तो resultant flux generate होगा, that is a vector of phi 3 and phi 2. Okay, having a degree of 60 degree interval. So that will generate, and it's a vector difference. Same way here, what is a resultant? So resultant one is the vector difference of phi 1 and phi 2. Same way here the resultant one is the vector difference of phi 1 and phi 3. Okay, so how we calculate that resultant one? So to find the resultant value, we have an equation. So this is the equation we can say, this is the equation we can say. So at 0 point or 0 degree, the resultant flux is given by, so here phi 1 is 0, flux phase 1 का 0 है, we got only phase 2 flux and phase 3 flux. So resultant flux is a vector difference of that 2 fluxes. So finally I can write phi r equal to under root phi 2 square plus phi 3 square minus 2 phi 2 phi 3 into cos theta. Okay, so that is a resultant flux equation of 2 vector. Okay, so now put the value here at 0 or at 0 point. We know phi 2 equal to minus root 3 by 2 phi m and phi 3 equal to plus root 3 by 2 phi m. Okay, so now put the value of phi 2 and phi 3 here. So I got this equation, minus 2 under root minus root 3 by 2 phi m plus root 3 by 2 phi m into cos 60. Now the square is here, so I can write 3 by 4 plus again for this 3 by 4 and 2 into 3 by 4 I can write, and cos 60. Now cos 60, that's we can write it is a 1. So finally I can write this equation. I hope you clear with this. Okay, now
again from this I can write this equation. It's a simple mathematical equations. 3 plus 3 plus 3 divided by 4. LCM I have taken. Okay, so finally I can write 9 by 4 into 5n square, or that is the under root. So finally I can write, if I remove the under root, so I can write 3 by 2 5n. Okay, so this is the resultant flux at particular point 0. Okay, same way at point 2. Now at point 2 we know phase 3 is 0. Phase 3 is 0, so flux of phase 3 is 0. I got flux of phase 1 and I got flux of phase 2. So resultant flux will be calculated by same way as this. Okay, then the value same way. Okay, mathematical same as this. So I got again the value, that is 3 by 2 5m. Here again it's a 3 by 2 5m. यहाँ भी मुझे वही मिल रहा है. Okay, so now for second point and for third point same phenomena is occur, and I got same value 3 by 2 5m, 3 by 2 5m. So magnitude wise I got some constant value at a different point, we can say, but the direction is a different. Here the direction be like this, here direction be like this, here direction like this, here direction like this. Okay, so magnitude wise I got a constant value, but direction wise I having some different value. Okay, so amplitude that is remain same, but direction, यहाँ ये डायरेक्शन है, यहाँ ये डायरेक्शन है, यहाँ ये डायरेक्शन है, यहाँ ये डायरेक्शन है. Okay, so finally I can draw like this. Okay, so at 0 point I got some value here, and the direction of that resultant flux be like this. Here the direction of the resultant flux like this, direction of the resultant flux like this, direction of like this. Okay, so from this I can say the resultant flux is of constant value, and that is nothing but a 3 by 2 5m. As on another word, it is nothing but 1.5 times the maximum value of flux. And secondly, the resultant flux is rotated. So resultant flux is rotated, which is shown by this. So the flux is in the form of some rotation. So the resultant flux of stator rotated at some speed, and that speed is known as a synchronous speed. So synchronous speed is nothing but a speed of rotating magnetic field, and that is given by this, and that is given by this equation now. Ns, that is the speed of magnetic field, and that is a synchronous speed, equal to 120, that is a phase shift, frequency of the supply voltage, or what the frequency of in India AC we have a 50 Hz supply, and the number of pole of the machine. So if you change the number of pole or frequency, then your field of rotation or speed of magnetic field is changed, means synchronous speed is changed. Okay, so if someone asks what do you mean by synchronous speed, so synchronous speed is nothing but a speed of magnetic field. Okay, so here we can say whenever AC supply is given to the stator, so in the stator rotating magnetic field is generated, and which is rotated with a synchronous speed, and that synchronous speed is given by this. Okay, if we say 50 Hz is frequency and pole is 4, so you can say synchronous speed is 1500. Okay, you can directly say. Okay, so rotating magnetic field is generated, and that is mathematically we have seen how it's generated. Okay, so the magnitude of rotating magnetic field is always constant, that we have seen, but rotating with some synchronous speed, and that is given by the equation Ns equal to 120 F by P. So from this equation we can also find the frequency. If we know the synchronous speed and if we know the pole, we can find the supply frequency of the system. Okay,
So now next topic, that is principle, or how rotor rotates. Now up till now we have seen that the field is generated in the stator winding. Okay, so we can say that a rotating magnetic field is generated. Now in stator and rotor there is air gap, उन दोनों के बीच में air gap होता है. Okay, now again rotor having some winding, रोटर के पास भी वाइंडिंग है. नाउ वेन एवर सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर, स्टेटर में फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड दैट इज़ अ रोटेटिंग, वो रोटेटिंग फील्ड होगा जो हमने अभी प्रूव किया है. अब फील्ड रोटेशन में है एंड रोटर वहाँ है और रोटर अभी स्टेशनरी मोड में है. ओके, रोटेट नहीं हो रहा है, स्टेशनरी मोड में है एंड उसके पास भी वाइंडिंग है. सो फील्ड इज़ देयर एंड वाइंडिंग इज़ देयर and field is in the form of some rotation. तो accordingly Faraday's law, field rotation में है and conductor is there, means winding is there. तो वो कट करेगा फील्ड को, we can say. okay, फील्ड को कट करेगा. so accordingly the Faraday's law, whenever conductor cuts the magnetic field, EMF is induced in that. so rotor winding में क्या होगा, रोटर वाइंडिंग में EMF जनरेट होगा, वोल्टेज जनरेट होगा. अगर रोटर को शॉर्ट कर देता हो या कोई लोड कनेक्ट करता हो रोटर वाइंडिंग के साथ, तो फाइनली वी कैन से करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा रोटर में. सो नाउ फ्लक्स भी है और करंट भी है, फ्लक्स इज देयर एंड करंट इज देयर. तो फाइनली वी कैन से टॉर्क इज जनरेटेड एंड ड्यू टू दैट टॉर्क रोटर स्टार्ट रोटेटिंग. ड्यू टू दैट टॉर्क rotor start rotating, or another word we can say current is there and flux is there. okay, current is there and flux is there. so accordingly again Faraday's law, when current carrying conductor is put in some magnetic field, some force is experienced on that, उस पर कोई फोर्स लगेगा कोई डायरेक्शन में, accordingly the Fleming's rule, लेफ्ट हैंड रूल. ओके, सो वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव होगा. okay, so same phenomena is occur in this, and on this principle rotor start rotating. now let's see again. so I have already told you how rotor rotate. okay, so the conductor be subjected to the rotating magnetic field produced when the three-phase supply is connected to the stator winding. obvious rotating magnetic field is generated, which is shown here. okay, whenever supply is given to the stator. okay, let's say the field is rotated in clockwise direction. let's assume that it is a clockwise direction. okay, so here field is there and that is in the form of rotating, and rotor is here and rotor having a winding. so winding is there and rotating magnetic field is there. so that winding cuts the field, winding cuts the field. okay, winding cuts it. so EMF is generated. so accordingly the Faraday's law of electromagnetic induction, EMF will produce in the conductor, EMF will produce in the conductor. okay, so now अब क्या कर रहे हैं कि EMF जनरेट हो गया रोटर में. अब रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं या कोई लोड कनेक्टेड करते हैं तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा. जैसे ही उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ओके, और यहाँ फील्ड इज़ देयर, यहाँ फ्लक्स तो है ही और इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है. सो अगेन अकॉर्डिंगली द Faraday's law, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन मैग्नेटिक फील्ड, सम फोर्स इज एक्सपीरियंस ऑन दैट, और वो डायरेक्शन यहाँ दिखाई हुई है एंड दैट इज फाइंड फ्रॉम दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और जो डायरेक्शन क्लॉकवाइज फॉर्म में है, यहाँ तो वो क्लॉकवाइज फॉर्म में ही बता रहा है. ओके, सो जो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सो फोर्स लग रहा है दैट मीन्स रोटर स्टार्ट. अब रोटर को फिक्स नहीं किया हुआ है हमने, तो रोटर अब पे फोर्स लगेगा तो रोटर स्टार्ट करेगा रोटेटिंग करना, बिकॉज फोर्स लग रहा है उसमें. ओके, सो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन है. ओके, सो नाउ बाय कपलिंग द रोटर सर्किट आइदर यूजिंग एंड रिंग और बाय द एक्सटर्नल सर्किट, external load circuit. okay, EMF is caused and current will start flowing through the conductor by using first of all right hand rule. To know the direction of induced current, we are using the right hand rule. okay,
Now whenever current carrying conductor is put in the magnetic field, some force is experienced on that, वो जो हम जानते हैं. Now the direction of this force is given by the left hand rule, okay, which is shown in figure, obvious. So it is seen that force acting on the conductor in the same direction of the rotating magnetic field, and rotor is free to move. So finally we can say rotor start rotating, means motor will start, मीन्स रोटर जो रोटेट हो रहा है, तो फाइनली वी कैन से कि भाई मोटर स्टार्ट हो गई, रोटर ही रोटेट होता है. ओके, एंड दैट इज़ अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर. इसमें कोई एक्सटर्नली सप्लाई या एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं किया हमने. वो जैसे ही हमने मोटर को सप्लाई दे दिया है, फ्लक्स जनरेट हो गया स्टेटर में, एंड रोटर अकॉर्डिंगली रोटेट करना स्टार्ट करता है. ओके, नाउ अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट हो रहा है, और रोटर की जो स्पीड रहती है वो लेस होती है सिंक्रोनस स्पीड से. तो रोटर उसको कैच करने के लिए ट्राई करता है, उसके पीछे पीछे भागता है. ओके, तो रोटर स्पीड इज़ ऑलवेज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड इन इंडक्शन मोटर. ओके, अगर दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो ब्लॉक की कंडीशन में आ जाएगा, वो सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करेगा. ओके, सो इन इंडक्शन मोटर टेक इन माइंड रोटर स्पीड इज़ ऑलवेज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, और मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट हो रहा है उसके पीछे पीछे रोटर स्टार्ट करेगा उसे कैच करने के लिए. ओके, सो देयर इज़ सम डिफरेंस. जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का, उसे हम कहते हैं स्लिप, उसे हम कहते हैं स्लिप. ओके, so let us consider the moment that rotor of induction motor rotating क्या सिंक्रोनस. अगर वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटर रोटेट होगा तो क्या होगा, रोटर इन दिस कंडीशन रोटर कंडक्टर कुडंट नॉट कट द फ्लक्स, वो फ्लक्स को कट ही नहीं कर पाएगा. तो नो ईएमएफ विल जनरेट, नो करंट विल बी देयर, एंड नो टॉर्क विल बी देयर. ओके, सो देयरफॉर द रोटर स्पीड इज स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड. ओके, उससे थोड़ा कम. अब जो डिफरेंस मिल रहा है बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड का, रोटर स्पीड इज़ योर एक्चुअल मोटर स्पीड. तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का जो डिफरेंस मिल रहा है उसे हम बोलते हैं स्लिप, उसे हम बोलते हैं स्लिप. सो स्लिप इज डिफाइन द डिफरेंस ऑफ एन एस माइनस एन, वेयर एन एस इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड और एन इक्वल टू रोटर स्पीड. और एन एस हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन. एंड परसेंटेज स्लिप डिफाइंड करना हो तो इट्स नथिंग बट एन एस माइनस एन अपॉन एन एस. हियर एन एस इज दैट, हियर एन एस इज दैट. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. पता चल गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ, स्लिप किसे बोलते हैं हम. ओके, नाउ वन एग्जाम्पल इज़ हियर. ओके, जो हमने इक्वेशंस यूज़ किए हैं, ये जो हमने इक्वेशन अभी यूज़ किए हैं, अकॉर्डिंगली वी हैव चूजन वन एग्जाम्पल, सो आप थोड़ा और जान पाओ. अ स्लीपिंग इंडक्शन मोटर, वन एग्जाम्पल इज हियर, सॉरी. अ स्लीपिंग इंडक्शन मोटर रन एट 290 आरपीएम. ये स्पीड किसकी है, 290 आरपीएम. दैट इज़ अ रोटर स्पीड. जो मोटर की एक्चुअल स्पीड होती है वो रोटर की स्पीड होती है एट अ फुल लोड when connected to the 50 Hz supply. Determine the number of pole and slip. आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पोल एंड नंबर ऑफ स्लिप. हियर एन एस इक्वल टू गिवन दैट इज़ 300 आरपीएम. उन्होंने दे दिया है एन एस इक्वल टू 300 आरपीएम. सो वी हैव इक्वेशन दैट एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी. हमारे पास इक्वेशन है एन एस. तो एन एस हम जानते हैं दैट इज़ इक्वल टू 300 आरपीएम. 120 इज़ गिवन, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन, 50 हर्ट्ज. सो नाउ आई कैन डायरेक्टली फाइंड द पोल ऑफ मशीन. सो द पोल ऑफ मशीन इक्वल टू, आई कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन एंड आई कैन फाइंड द पोल ऑफ मशीन. ओके, सो आई गॉट द पोल. अनदर इज अ स्लिप. सो स्लिप, for slip we have equation as equal to ns minus n upon ns. ns that is 300 minus n that is 290 rpm upon ns 300, and that is equal to
3.33%. So slip always come in the form of some percentage. Okay. One more example is here. The stator of 3-phase induction motor have a 3 slot per pole per phase. 3 slot per pole per phase. If the frequency is 50 Hz, calculate the number of stator pole produce and total number of slot on the stator. आपको पहले पोल फाइंड आउट करना है, देन टोटल नंबर ऑफ स्लॉट फाइंड आउट करना है, एंड सेकंड इज स्पीड ऑफ रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड फाइंड आउट करनी है, NS फाइंड आउट करना है. So here we have equation that for induction motor that pole equal to, one more equation you have, pole equal to 2 into slot per pole per phase, 2 into slot per pole per phase. So n equal to n जो दिया हुआ है क्या है, slot per pole per phase, and वो given है कितना है slot per pole per phase, that is 3. So pole equal to 2 into 3 and it's a 6 pole. Okay, so pole मिल गया. Then total number of slot equal to, अब ये क्या दिया है, 3 slot per pole per phase. So 3 slot per pole per phase. So I can write 6 पोल दे दिया है, 3 स्लॉट है एंड 3 फेज है. सो मल्टीप्लाई विथ 6 into 3 into 3. So I got 54 total number of slots is there. And lastly we have a synchronous speed, and that we have equation 120 F/P. frequency भी है, पोल भी है आपके पास, so you can directly got the synchronous speed. Okay, so इस तरह के एग्जांपल्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं. So these are the basic example of the equation. Okay, I hope कि आपको पता चला हुआ. Okay, अगर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो. Okay, so finally you have a assignment. Okay, question is given and you have to give the answer. Okay, define the rotating magnetic field for 2-phase machine. अभी जो इस वीडियो में हमने डिफाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड, that is for the 3-phase. You have to find for the 2-phase machine. Then explain why rotor rotates, जो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, and one example is that. Okay, प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर देना है आपको, इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है. ओके, थैंक यू वेरी मच.